Okay students, in last video we were doing about adjectives of number. We have done definite numeral adjective. Now it is indefinite numeral adjectives. Indefinite means that are not fixed, they don't give the exact number. These type of numeral adjective indicate an approximate amount instead of the exact number. Approximate मतलब near about, अनुमान लगाना. Some, many, few and several etc. are indefinite numeral adjectives. For example, several students refuse to be silent. Several, many people attended the meeting. Many, I bought some eggs. Several, many and some are indefinite numeral adjectives. How are they different from the adjective of quantity? Adjective of quantity also tell the approximate amount, not the exact. Then what is the difference between them? These numerals are used with countable nouns, as you can notice. They are countable nouns, and in adjective of quantity we use like some rice. The rice is uncountable noun. Okay, so these adjective that are quantity adjective are used with uncountable nouns, and these are used with countable nouns. This is the difference. Next is distributive numeral adjectives. Distributive numeral adjectives refer to an individual nouns within the whole amount. Every, each, either and another are some examples of distributive numeral adjectives. Distributive numeral adjectives are the adjectives ऐसे होते हैं, they through them whole group is addressed as well as an individual is also addressed. ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअल को भी एड्रेस करके बोला जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास स्टूड अप. ईच वन ऑफ यू विल गेट ए डिफरेंट प्रोजेक्ट. एवरी स्टूडेंट इन द क्लास स्टूड अप. होल क्लास, इट मीन्स एवरी स्टूडेंट इन द क्लास स्टूड अप मीन्स होल क्लास स्टूड अप, पूरी क्लास खड़ी हो गई है ना. ईच वन ऑफ यू विल गेट ए डिफरेंट प्रोजेक्ट. ईच वन विल गेट यानी कि पूरे ग्रुप को मिलेगा, और उसमें ईच को यहाँ पे एड्रेस किया गया है. इट मीन्स पूरे ग्रुप को मिलेगा, यानी कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ग्रुप भी और इंडिविजुअल भी. नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन. ये बिल्कुल इंडिकेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको. ये डायरेक्टली उसके बारे में बात करता है, अबाउट द सब्जेक्ट, जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसके बारे में बात करता है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज. फॉर एग्जाम्पल, दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड. दैट रेफर्स टू ए सिंगुलर नाउन फार फ्रॉम द स्पीकर. दैट हैज़ बीन यूज्ड ना, एज यू हैव read about demonstrative pronouns. They are different from demonstrative adjectives. You see that building is the noun here, okay, and that is the demonstrative adjective. This is the difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. They the adjectives are used with the noun just after them. Okay, एडजेक्टिव्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव वाले होते हैं उनमें नाउन साथ लगा होता है. ओके. दिस कार इज़ माइन. दिस रेफर्स टू ए सिंगुलर नाउन क्लोज टू द स्पीकर. दिस एंड दीज आर यूज्ड विद नियर बाई थिंग्स, एंड दैट एंड दोज आर यूज्ड नाउन, थिंग्स, पीपल, that are far away. These cats are cute. These refers to the noun close to the speaker. Those
refers to a plural noun far from the speaker, those flowers. Okay, understand? Demonstrative adjectives. Now come to possessive adjectives. A possessive adjective indicates possession or ownership. It suggests the belongingness of something to someone, something or something. Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, our, their, your. All these adjectives always come before a noun. इंडिकेट्स पोजेशन और ओनरशिप, यानी कि ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये ओनरशिप दिखाते हैं कि दिस थिंग बिलोंग्स टू दैट पर्सन. इट बिलोंगिंगनेस रिलेशन दिखाते हैं आपस में. फॉर एग्जाम्पल, माई कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड. हुज कार? माई कार. दिस इज पोजेशन, माई कार, नॉट हिज कार. ओके. हिज कैट इज़ वेरी क्यूट. हिज कैट, नॉट माइन. तो ये ओनरशिप हो गई कि किसकी कैट है, कार किसकी है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज सी टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिव. आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन. जॉब, आवर जॉब, हमारी. हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग. ओके. हर एंड आवर आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट one is interrogative adjectives. An interrogative adjective asks a question. Through interrogative adjectives, questions are asked. Question पूछने के लिए भी use interrogative adjectives. An interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun. इसमें भी noun और pronoun are used just after the interrogative adjectives. As you see, the interrogative adjectives are which, what, whose. Not all the interrogative words are adjectives. These are which, what and whose are only the question words that are adjectives. These words will not be considered as adjectives if a noun does not follow right after them. इनके साथ में just after them there should be noun. Then they become interrogative adjectives. See, for example, which phone do you use? What game do you want to play? Whose car is this? You see, noun has been used just after the interrogative adjective. Okay. I will send the PDF of the solution of this chapter and you will fill in the book. Okay, bye.